हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुल पाथ। मैं हूं आपकी होस्ट शीतल शर्मा CFA और आज मैं आपको बताने वाली हूं 5 स्किल्स जो आपको आपके ड्रीम करियर तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और या ये कहें, ये जो 5 स्किल्स हैं ये कीज हैं किसी भी सक्सेस के। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो स्किल्स है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है। और ऐसा क्यों है? अज्यूम आप कहीं भी जाते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हो, अगर आप अपना मैसेज कॉन्फिडेंटली डिलीवर नहीं कर पाते हो तो लोगों को लगता है कि आपको कुछ आता नहीं, आप कोई भी जॉब अच्छे से नहीं कर पाएंगे या बिजनेस जो कर रहे हैं उसको अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इट कैन बी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उड़िया, उर्दू, whatever language you choose, but you will able to deliver your message confidently। और जब हम कहते हैं कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं? जो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी टॉपिक की आप बात कर रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। Until and unless you don't have enough knowledge, you will not able to speak confidently. So सबसे पहले आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाइए, पढ़िए जितना हो सके। रीड अ बुक each and every day whenever you get a chance. Second, बोलिए, बात कीजिए। जब भी आपको मौका मिले आप बोलिए। बोलिए का मतलब ये नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट में जाइए। लाइक आप क्लास में हैं, प्रोफेसर ने कोई क्वेश्चन पूछा, स्टैंड अप एंड आंसर दैट। और यू बाय योरसेल्फ स्टैंड अप एंड आस्क अ क्वेश्चन। इससे क्या होगा? एक तो आपकी जो झिझक है, जो हेजिटेशन है बोलने की, वो कम हो जाएगी। दूसरा, आप में कॉन्फिडेंट आएगा। इवन अगर आप कोई गलती भी करते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। टू मेक मिस्टेक इज गुड। व्हेनेवर यू वांट टू लर्न समथिंग यू विल मेक मिस्टेक, but if you will not make mistake you will not learn anything. So stand up and ask questions as much as possible. What other you can do whenever you get an opportunity, like कोई स्पीच कंपटीशन है, क्विज कंपटीशन है, or anywhere where you can go and speak, where you can show your knowledge. Go there, speak as much as possible. I'm not talking about speaking in between your friends in 3-4 and just talking unpurposefully. That doesn't make sense. I'm just talking about the things which will add value. And when we talk about communication skill, it's not just the verbal. You need to focus on written as well. Like when you will apply for a job, what will be the first thing a company will see? It's your resume. So you should know how to write a resume. You should know how to write an email. So focus both on your written skills as well as on your communication skill. If you want more information how you can improve your communication skill, you can comment below and I'll provide you further information. The second skill which I'm talking about here is time management. हमने हमेशा सुना होगा टाइम इज मनी, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट्स द बिगेस्ट ट्रूथ। अगर आप अपना टाइम अनपर्पजफुली, अनप्रोडक्टिव चीज़ों पे वेस्ट कर रहे हो तो आप सफलता से बहुत दूर जा रहे हो। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, बट कुछ लोग बहुत सक्सेस होते हैं और कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते। उनके बीच में मेन डिफरेंस ये वी टॉक अबाउट किस्मत, लक, ये दैट कैन बी द फैक्टर एज वेल, बट जो मेजर फैक्टर होता है वो ये है कि उन लोगों में किसने कितना टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों पे यूटिलाइज किया। अगर हम निकाल दें 8 घंटे सोने गए और 2 घंटे हमारी डेली एक्टिविटीज़ गए, उसके बाद 14 आवर्स बचते। उन 14 आवर्स को में से हम कितने आवर्स प्रोडक्टिव कामों पे यूटिलाइज करते हैं? कभी आप, और When we talk about time management, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक शेड्यूल बनाओ और उसको दीवार पे चिपका दो और देखो कि यार मैंने कहाँ कब क्या करना है। वो सिर्फ आप 2 दिन 4 दिन करें then you will forget. It's not about that. It's about you, in your mental state, you should know how much productive things you are doing. You are not
going through your Instagram reels for 1 hour, 2 hours and wasting your time. You are not just watching YouTube all the time. And even if you are going for classes, you are just talking to your friends and not focusing on your study. You have your practicals, but you are not doing your practicals well. You are going to office just for the sake of office to get your pay, but not adding value. All these things are unproductive. You are not working on your health. You are obese. You are having health issues. So, time management is must. Have that mental ability to understand how much work you are spending on productive things. Today, in evening, sit for few minutes and think what you have done during the day, what have added value, and where you have spent most of your time. Do this exercise for few days and you will understand how much productive things you are doing. The third thing what I will talk here about, internship. Whenever you get a chance, during your graduation, during your schooling, whenever you get a chance, do internship. Internship provide you real world experience. You have something to add to your resume. If you haven't done anything during your graduation, you have no knowledge how corporate works, how business works, how jobs need to be done. But if even you have done 1 and 2 internship, the companies will be knowing, oh, this man is interesting, this girl is interesting, she really wants to do something, or he really wants to do something. So do internship. And there is a lot of website available who provide internship. Pathshala, I have seen a lot. Just go on internet, search internship in your course. Just send your resume. Maybe send your resume to 100, 200 companies. I'm sure you will get call from 1 or 2. You can do internship anytime, maybe during your winter break, summer break, after your exams, whenever. Do it, even if it's for few months. Do it. Think about it. And don't think, oh, nobody will give us internship. Until and unless you will not try, how will you know that someone will give you or not? So, do your internship during your graduation. That's a must. Fourth thing which I will be talking here is tutoring. Why I'm saying tutoring? When you teach someone, it adds value. Your concepts are more clearer when you want to teach someone. They will ask you questions. If you are studying in second year, teach first year. If you are in first year, teach your school. But do the tutoring. किसी को भी पढ़ाने से जितने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट ऐसे क्लियर किया कि आप किसी और को समझा पाए. सिर्फ आपने क्रैम नहीं किया, आपने उन कंसेप्ट को अच्छे से समझा है. एंड वंस यू हैव अंडरस्टूड दोज कंसेप्ट एंड आंसर्ड द क्वेश्चंस, यू विल नेवर फॉरगेट दैट क्वेश्चन. सो प्लीज डू tutoring. And again, there is a lot of website available. You can go to your library or go to shop where you can put your pamphlets. You want to do tutoring, and I'm sure in any school, any college, any city, you can find the opportunity to do tutoring. Least but not last, I'll talk about add some skills. Skills that relates to your course. If you are doing something in computer science, add some coding. If you are doing something in engineering, learn some software. Anything which relates to your course. Do something which makes you different than others. Like, assume in one class there will be 100 students who will be passing out in the same year. Obviously, it will be hard for everyone to get a job. How you can stand out of those 100 students or those 1 lakh students? Do something different than those who will be passing out from the same year. Add some skills. And one more thing I'll say, learn Microsoft Office. I have seen many graduates who passed out from graduation but don't know how to work on Excel, Outlook, Word. These are the common skills which will be used in each and every job. So learn that. Try these 5 skills during your graduation. Focus on each one by one. I'm sure you will learn a lot. Hope this video was helpful, and if you want to hear on some other topic,
just drop a comment in the comment box. Thank you.